আৰু কেন্দ্ৰৰ এই অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। অগ্নিবীৰসকলক অসম আৰক্ষীত চাকৰি দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে। In Assam, there is no violence because we have already told anybody who will come out of Agnipath or as Agnibir, if he is a resident of Assam, we will give them job in our police. So he will have experience from army, and as with army training, he will join in Assam Police Battalion. So in Assam, it is a win-win situation because at no point of time we have more than 600 to 700 people joining Indian Army. 25% will be retained by them. 500 will come to market. In Assam Police, every year we recruit more than 3,000 people. So we will be very gladly and happily accommodate all the people who will come out from the Agnibir or Agnipath scheme. So in Assam, rather people are now concentrating on organizing training camps, how we can push more and more Agnibir into the Indian Army. Yes, that will be a direct recruitment, but always subject to some certification from Army, good conduct, good behavior. Then we have to keep SC, SC things also on line. But generally, as of now, we will be in a position to accommodate all Agnibirs who will come out from Indian Army, to accommodate them in the Assam Police Battalion and Assam Police. I am not only saying that we will give priority, I am saying that we will absorb them. এতিয়া অগ্নিপথৰ এই হিংসাত গোটেই দেশ জ্বলিছে। বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা ইত্যাদি জংগী আন্দোলন হৈছে। তেলেংগানাতো জংগী হৈছে আন্দোলন। পশ্চিমবংগত প্ৰতিবাদে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ঘৰত আক্ৰমণ পৰ্যন্ত হৈছে। জনাই দিয়া হৈছে কেইবাটাও স্থানত ৰেল। বিহাৰৰ 12খন জিলাত 19 জুনলৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে। দুই প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। 13 ৰাজ্যত প্ৰতিবাদৰ বাবে 164খন ৰেলৰ চলাচল 164 ৰেল এই ৰেলৰ চলাচল বৰ্তমান স্থগিত ৰখা হৈছে। প্ৰভাৱিত হৈছে 38খনকৈ ৰেলৰ চলাচল। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এই অগ্নিপথৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তক লৈ কিন্তু দেশজুৰি এতিয়া এই গোটেই প্ৰতিবাদে, এই গোটেই বিৰোধে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গতিকে এটাৰ পাছত আৰু এটা ঘটনা ঘটি আছে য'ত হিংসাত্মক ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাইছে একাংশ লোক। এতিয়া এই আছিলে 14 জুনৰ কথা। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ভাৰতীয় সেনাৰ 3টা বিভাগ স্থল, নৌ আৰু বায়ু সেনাৰ মুৰব্বীসকলক লগত লৈ ঘোষণা কৰিছিল অগ্নিপথ আঁচনি। কিন্তু সেনাবাহিনীত 4 বছৰৰ বাবে হ্ৰস্বম্যাদী এই নিযুক্তিৰ উদ্দেশ্যেৰে দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰায় 46,000 নিবনুৱাক নিযুক্তিৰ এই আঁচনি মুকলি কৰাৰ পাছতে এই প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ইতিমধ্যে সেয়া দেশবাসীৰ চকুৰ আগত। সেয়ে দুদিন পাছত অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত চৰকাৰে আঁচনিখন সন্দৰ্ভত একাংশই অপব্যাখ্যা কৰা বুলি আখ্যা দি এক স্পষ্টীকৰণো প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত উল্লেখ কৰা হয় যে প্ৰকৃততে অগ্নিপথ আঁচনিৰ যোগেদি নিযুক্তি পাবলগীয়া এই নিবনুৱাসকল, এই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল যাক অগ্নিবীৰ নামেৰে জনা যাব, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। তালিকাখনত কোৱা হয় যে অগ্নিবীৰসকলে 4 বছৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছত সহজেই বেংকৰ ঋণ আদি লাভ কৰিব। লগতে 4 বছৰৰ পাছত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ। আৰু অন্য চাকৰি, বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল আৰ্মড পুলিচ ফৰ্চেছ বা CAPFত যোগদানৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা সকলক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। ইফালে যিসকলে কৈ আছে যে অগ্নিবিৰৰ বাবে উপযুক্ত বিবেচনা কৰা যুৱক যুৱতীসকল কম বয়সীয়া হোৱা বাবে দেশৰ ভৱিষ্যত সেনাবাহিনী অপৰিপক্ক হ'ব, সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে কয় যে বিশ্বৰ অধিকাংশ দেশৰ সেনাবাহিনীত কম বয়সীয়া যুৱক যুৱতীসকলকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়। অগ্নিবীৰৰ নিযুক্তিয়ে দেশৰ সেনাবাহিনীক দুৰ্বল কৰাৰ প্ৰসংগত চৰকাৰৰ যুক্তি হৈছে যে বহু দেশত অগ্নিবীৰৰ দৰে ব্যৱস্থা ইতিমধ্যেই বলবৎ হৈ গৈছে আৰু দেশত প্ৰথম বছৰত সেনাবাহিনীত মুঠ
3% অগ্নিবীৰ থাকিব আৰু 25% অগ্নিবীৰক অতি কঠিন বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে মূলসুটিৰ দেশৰ সেনা বাহিনীত যোগদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব একেদৰে সেনাত অগ্নিবীৰৰ সংযোজনে ৰেজিমেণ্টৰ ব্যৱস্থাক নোহোৱা কৰিব বুলি যি প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো চৰকাৰে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে দেশৰ সেনা বাহিনীত ৰেজিমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটে পিছে চৰকাৰৰ এই স্পষ্টীকৰণে বিশেষ কাম নিদিলে অব্যাহত থাকিল দেশজুৰি হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ উপায়ন্তৰ নাপায় আজি পুৱা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ঘোষণা কৰিলে যে ঠিক আছে পূৰ্বৰ 17 পৰা 21 বছৰৰ ঠাইত এতিয়া 23 বছৰলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচৰা যুৱক যুৱতীৰ বয়সৰ সীমা লগতে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে অতি সোনকালেই অগ্নিবীৰ নিযুক্তিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ সকলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ তেখেতে পৰামৰ্শ দিছে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুনক আজিৰ দিনটোত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্যৰ কিয়দাংশ केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला यह सच्चाई है इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं একেদৰে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া তথা সাংসদ ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোৰেও নৱপ্ৰজন্মৰ সকলোকে আঁচনিখন ভালদৰে বুজি লৈ সেনাবাহিনীত যোগদানৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে শুনক ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোৰৰ মন্তব্য नमस्कार साथियों सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें ये आपके लिए और देश के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कैसे सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के दूसरा हर 4 में से एक व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा तीसरा जो बाहर भी जाएंगे आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो और यही नहीं बीएसएफ सीआरपीएफ पुलिस इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है ये जरा सोचिए चौथी बात ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है और दूसरे ही देशों में नहीं भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए ऑफिसर्स के लिए कई सालों से चल रही है सेना इससे और मजबूत हो रही है और सबसे आखिर में इस योजना के पीछे 2 सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं संस्था हैं एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों पे विश्वास रखिए संक्षिप्त में अभी बताया है विस्तार से बाद में बताऊंगा तब तक के लिए जय हिंद ইয়াৰ মাজতে ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰী নিবনুৱাসকলে প্ৰতিবাদৰ নামত ৰেল ষ্টেচন বা ৰেলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বাবে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে সকলোকে ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কাৰণ এই গোটেই ঘটনাই আসলতে মানুহৰ মাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে শুনক আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है इसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए ऐसा मेरा सबसे निवेदन है ইফালে অগ্নিপথ আঁচনি কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি উদ্ভৱ হোৱা অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ মাজতে বিৰোধী দল সংগঠনসমূহেও আঁচনিখনক লৈ চৰকাৰৰ এক
অপৰিপক্ক সিদ্ধান্ত বুলি কটু সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আঁচনিখন সন্দৰ্ভত ক'লে যে 24 ঘণ্টা নহওঁতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বয়সৰ সৰ্বোচ্চ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বিষয়টোৱে ইয়াকেই প্ৰমাণ কৰিছে যে চৰকাৰে কোনো পৰিকল্পনা নকৰাকৈ খৰধৰকৈ এই আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। একেদৰে কংগ্ৰেছ নেতা অজয় মাকেনে এই আঁচনিখনে দেশৰ নিবনুৱা সমস্যাক ঠাট্টা মস্কৰা কৰা বুলি আখ্যা দি কি কাৰণত আঁচনিখন অপৰিপক্ক সেই সন্দৰ্ভত নিজৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद 62,29,000 जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929 लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। ইফালে আন এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা সচিন পাইলটে এই আঁচনিখনে কাকো উপকৃত নকৰে বুলি আখ্যা দি কৃষি আইনৰ দৰে বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। এই মুহূৰ্তত শুনক সচিন পাইলটৰ মন্তব্য। सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो, तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं और जिन लोगों ने फ़ौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। ইফালে একেদৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা সঞ্জয় সিঙে আঁচনিখন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কেৱল আম আদমি পাৰ্টিয়েই নহয়, হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰে বিৰোধীৰ এই সমালোচনাৰ উত্তৰ দিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে এখন ভাল আঁচনিক বিৰোধীয়ে ৰাজনীতিকৰণ কৰি পৰিস্থিতি বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শুনক এই মুহূৰ্তত জয়ৰাম ঠাকুৰে এই গোটেই পৰিৱেশটো সন্দৰ্ভত কি কৈছিলে। सबसे पहले तो मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष इस मुद्दे को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, राजनीति इसके साथ करने की कोशिश कर रही है, वो वाजिब नहीं है, जो उचित नहीं है। पूरे देश भर के नौजवानों के लिए एक अवसर होगा। 4 वर्ष के लिए उनको सेना में अगर काम करना है तो एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, उसको अवेल कर सकते हैं। और वैसे ये होना भी चाहिए कि देश के नौजवानों को देश के प्रति अपने संकल्प के साथ आने वाले समय में काम करना चाहिए। ये बहुत आज की तारीख में ज़रूरत भी है। देशभक्ति की भावना उनके बीच में हो, देश के प्रति एक जो है एक जज्बा उनके दिल में हो,
देश की रक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत ही पवित्र कार्य है। ইফালে এই সকলোবোৰৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে অগ্নিবীৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। চলিত বছৰৰ ডিচেম্বৰতে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব আৰু 2023ৰ মাজভাগত কাৰ্যক্ষেত্ৰত অগ্নিবীৰসকলে সক্ৰিয়ভাৱে দেশ সেৱাত আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰিব। First Agniveer, we reckon, will join our regimental centers by December and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. As far as the youth is concerned, I feel they haven't fully understood the contents and the implications of the scheme, and that is why there are some apprehensions in their mind. But once they have fully understood the contents of the scheme, I'm sure that they will realize it is not only for their good, but also for the good of the nation and good of the Indian Army. In the last couple of days, a number of initiatives have been announced by the state. এয়া আছিলে অগ্নিবীৰ আৰু এই গোটেই বিতৰ্কটোক লৈ আজিৰ দিনটোৰ শেহতীয়া আপডেট। আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু কি হয় সেয়া নিশ্চয় আপোনাক জনাই যাম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।